नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर उपेश। और आज का दिन दोस्तों यहां पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स आने वाले हैं, ये जो 3 लोगों की एक्सपर्ट्स की टीम बनने वाली है दोस्तों, ये अपने आप में इतनी बड़ी है। और आपको एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में एक फोरम में क्या चाहिए, तो मेरे साथ दोस्तों देखिए, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है। बोलते सब हैं, बात सब करते हैं, चर्चा सब करते हैं, पर आगे कोई नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा किस लिए हो रहा है, इन चीज़ों को रोकने के लिए। तो आज मेरे साथ बहुत ही बड़े एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। पहले मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा अपने लॉयर, लीगल एक्सपर्ट, एडवोकेट संदीप शर्मा जी का। संदीप शर्मा जी, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। संदीप शर्मा जी एक क्रिमिनल लॉयर हैं और पिछले कई सालों से बहुत सारी इन्होंने जो जो क्राइम्स हैं, उनको वो डिबंक किया है हम कहें। और बहुत सारे केसेस जो ऐसे थे, जो रियल केसेस एक्चुअल में, जैसे आप कहते हैं ना, जो रियल आप टीवी में देखते हैं, जिस तरीके से एक लॉयर एक केस के लिए लड़ता है, मैंने संदीप शर्मा जी को ऐसे देखा है, ऐसे सुना है। तो मैं संदीप शर्मा जी आपका बहुत बड़ा फैन हूं और आज आपको मैंने इनवाइट किया और मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और संदीप शर्मा जी एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर भी हैं। ही हैज आल्सो बीन a thorough researcher in the crime scene investigation. He has done his forensic degree as well, and as LLB, LLM, he is a practicing lawyer in Delhi High Court right now. And the other guest, along with me, Miss Ishara Archarrie. Miss Ishara Archarrie, I would like to welcome you here, okay, on my channel. And Miss Ishara Archarrie is a criminologist. She has worked with the South African police previously, and now in US as well. She is there, and right now we are going to talk about this sensitive issue. आज का सेशन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और आपके लिए शायद कुछ कर गुजरने वाला हो सकता है। मैं यहाँ पर अपने एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हुए सबसे पहले संदीप शर्मा जी से मैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए ये क्वेश्चन पूछूंगा। संदीप शर्मा जी, रेप को लेकर रेप को लेकर बहुत सारी मिथ्स हैं कि ये रेप कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। अगर हम किसी लड़की के साथ ये करते हैं तो ये रेप कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि जुवेनाइल है भैया, अगर रेप कर दिया तो ऐसा रेप होगा नहीं होगा। तो आखिर में रेप लीगली हम डेफिनेशन पूछे यहाँ पे सब दर्शकों के लिए, तो है क्या? Thank you, Dr. Sharma, for inviting me. Please let me know, whether should I speak in Hindi or in English, or In both. I think Ishara will be comfortable and I will translate it into Hindi as well, if there will be an issue. Yes. That's fine. The basic understanding of rape, we need to understand the concept of rape. We need to divide it in two parts: prior to 2013 and after 2013. Okay. I think you must have remembered that there was a gruesome rape case happened in Delhi, we generally known as the Nirbhaya gang rape, right? Mm-hmm. Prior to that incident, after that incident, Justice Verma committee was constituted, and it actually thoroughly relooked the case of rape. So, on the recommendation of Justice Verma's committee, the concept of rape and the definition of rape was thoroughly changed in India. Prior to 2013, the rape means that there must be penetration. There must be some sort of penetration, irrespective of the degree of penetration, but there must be some penetration, right? If you are inserting your finger, your something, anything else other than your genetical organ, that shall not be comes in within the ambit of rape, but that shall become that was in the ambit of the 354, that is the modesty of a woman. Okay. But after 2013, a concept of digital rape was introduced in India. Though this term, Ishara is very much aware of this term, though this term is not familiar in India, digital rape, because it is an American, it is a term which has been borrowed from US. Digital rape, हमने include किया, जिसमें ये था कि if you are inserting your penis, that is rape. But if you are inserting anything other than anything like your finger, like bottle, like any damn thing, if you are inserting within the any of the cavity of a female, that shall be comes within the ambit of rape, and that is the digital rape concept. So by through this thing, the ambit of rape was extended. Number one. Number two, if any person has committed any act of sexual relationship or establishing physical relation without the consent of a female, without the will of a female, even with the consent of the female, but that consent has not been obtained by
by free means. Likewise, Yeah. if you have undue influenced her, if you have threatened her, so you have obtained the consent, but there is no will, right? So, and if you are committing physical relationship, if you are a police officer, if you are an army man, if you are a doctor, if you are running an NGO or organization, and if you are committing a sexual relationship with a female which is in your under authority, that shall be a rape, right? Even you are doing it with the consent of that lady, but if you are obtaining that consent by unlawful means, that is also rape. You cannot claim defense, the female was the consenting party. No, though she was the consenting party, but that consent was obtained through improper means. It is rape. Yes. So in order to understand the concept of rape, we have to look at in two parts. Before 2013, the concept of rape was very narrow. There was only an actual penetration was required, but after 2013, the concept of digital rape was introduced, and that is the whole scenario of rape. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है पर्सनल। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि किसी माइनर की कंसेंट ले लेना, माइनर की कंसेंट इजीली मिल जाती है। माइनर कोई भी आप टॉफी देकर, आप बहला फुसलाकर, मेरे पास एक केस है, एक यूएस का एक केस है कि किसी माइनर की कंसेंट ले लेना, क्या ये कंसेंट में माना जाएगा कि कंसेंशुअल था? No. If we go with the Indian laws, first of all, we need to understand that who is minor in India, who is juvenile in India. Earlier, prior to 2000, the age of juvenility in India was 16, as per the CRPC, right? But though with the Contract Act and the Majority Act, that is a different thing. But we are talking about criminal law. In CRPC, the age of juvenility was 16. But after the UN Convention of Child Rights, उसके बाद फिर इंडिया में जुवेनाइल, बिकॉज इंडिया वाज द सिग्नेटरी ऑफ दैट कन्वेंशन, तो फिर एक चाइल्ड राइट्स के लिए जब इंडिया में बात हुई, तो इंडिया ने जब अपना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया पहला, तो जुवेनाइल की जो एज फिक्स करी दैट वाज 18. तो अंडर 18 एवरीबडी इज जुवेनाइल इन इंडिया, राइट? So, but in Indian, as per the Indian law, be it civil law, be it criminal law, be it सर, financial law. लोगों की फरमाइश है हिंदी में ही हम बात करें ज़्यादातर, एंड देन वी कैन यूज सर्टेन टर्म्स इन इंग्लिश एज वेल। I'm equally comfortable with Hindi. तो उसमें क्या हुआ ना कि इंडिया में जब ये लॉ पास हुआ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पहला 2015 में रिवाइज होकर अमेंड होकर दोबारा पास हुआ, उस एक्ट में क्या था, हमें बताया गया कि हर इंसान जो 18 साल से छोटा है वो जुवेनाइल, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और द कंसेंट, माइनर की कोई कंसेंट नहीं होती, बिकॉज हमें हमें इस लॉ में हमें प्रिज्यूम करते हैं दैट माइनर इज अनअवेयर अबाउट द नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। उसे वो नहीं पता कि वो क्या काम कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, इसीलिए हम माइनर की कंसेंट को कोई कंसेंट नहीं मानते। और अगर माइनर आपको कोई कंसेंट देता भी किसी काम को करने की, तो अब आपको इसके लिए अगर एक माइनर 16 साल की लड़की है और वो कहती कि हाँ मैं अपनी मर्जी से इसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रही हूँ, तो इवन उस कंडीशन में भी वो लड़का रेप के लिए लाइबल है। इवन प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस व्हिच वी नोन एज पॉक्सो एक्ट, वो पॉक्सो एक्ट में लाइबल हो जाएगा लड़का, एंड दैट इज मोर ग्रेवर देन आईपीसी, देन इंडियन पीनल कोड। अच्छा, तो Miss Ishara, it's a question to you. As say Advocate Sandeep Sharma ji said, minor. If there is a person who is a minor till the age of 16 and 16 years, 1 day more, 16 years, 1 day more, will she still be considered as minor? Well, technically, as in India, we know that the legal age of consent is 18 and has been dropped to 16. All right. So I would still think that it would be, a statutory rape, in my opinion, Yes, Sandeep ji. because that's still a child. I would like to correct Ishara. It has not been dropped to 16. It has been dropped to 16 in case of a juvenile offender, that is juvenile in conflict with law. Okay. There's juvenile offender. So, in case of Nirbhaya, though the girl was an adult, but there was a culprit who was juvenile. Yes. So still there is a provision that juvenile will go to juvenile jail and for rehabilitation or something like that, or what? Under the Juvenile Justice Act, the culprit, we cannot keep a person in a jail for number one thing. It is an observation house. Okay. We cannot call it jail. We cannot keep him behind the bar. We cannot put any police officer in the
in the uniform, right? We cannot keep him shackled. हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं. वो फ्री होता है, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन होम में रखते हैं, उसको जेल में नहीं कहते हैं. और उसको मैक्सिमम हम उसमें 21 साल की एज तक रख सकते हैं. तो 18 से ऊपर. लेकिन कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, मान लो आप ऑफेंस करा 17 साल का है, लेकिन केस चलते चलते वो 19 साल का हो गया, अभी डिसीजन नहीं आया, तो फिर हम उसको जेल नहीं भेजेंगे, हम उसको ऑब्जर्वेशन होम में ही रखेंगे. और जैसे ही वो 21 साल का होगा, हमें उसे बाहर निकालना होगा. हालांकि अब वो 16 से 18 साल वाला कंसेप्ट जो आ गया है, दैट अगर आप 16 साल से ज्यादा हैं और 18 साल से कम है, और अगर आप उस बीच कोई हीनियस ऑफेंस कर देते हैं. अब हीनियस ऑफेंस क्या है? वो हर ऑफेंस हीनियस ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है. अच्छा, ओके. मतलब मिनिमम उसमें 10 ईयर्स होनी चाहिए. अभी दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी इसी बात के ऊपर, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने डिफाइन करा था, क्योंकि देयर आर सो मेनी ऑफेंसेस इन इंडिया जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट तो लाइफ है, बट मिनिमम पनिशमेंट उसमें नहीं है. तो उन सारे ऑफेंसेस को जिसमें मिनिमम पनिशमेंट 7 साल नहीं थी, उसको उनको हाई कोर्ट ने सीरियस ऑफेंसेस माना, हीनियस ऑफेंसेस नहीं माना, राइट. तो अब उस ऑफेंस में क्या होता है कि अगर वो जो माइनर, आप जो निर्भया गैंग रेप में बात कर रहे थे, वो लड़का भी जैसे ही 21 का पूरा हुआ, वो बाहर आ गया था, उसको फाइनेंशियल एड भी मिली, उसको रिहेबिलिटेशन के लिए उसको चांसेस भी मिले, और आज वो गलत है ना, शायद. ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना. ओके मिस इशारा, दिस क्वेश्चन टू यू. Why so many people? Why so many people? I will say that there are ways. There are prostitutions. You can go and pay and do something else, whatever you want. Why some people drop down to this level to commit rape? Okay, we have to understand that, okay, we're speaking technically about India, right? We're centering this conversation around India, Overall, first of right? all, overall, then All over definitely the world. different scenario in India as well. Yeah. Yeah, but in India specifically, they have this patriarchal system, okay, where rape is perpetrated against women because they are seen as the weaker sex, okay. It is very much dominated by men, okay. So women are seen as subservient. They are seen as objects of entertainment to men. They are objectified by men. Okay, men have a sense of self-entitlement. Because she's a woman, or because she's my wife or girlfriend, I can treat her any way I like. So this is why they do it. And there are many other reasons as well. You have very poor literacy rates, right? People may not know what rape is. Children don't know what rape is. They don't Mrs. know who to Sharma, I trust. would like to say something. Recently, in Tamil Nadu, in one of the state of India, a 77-year-old man. Was accused of rape. Yes. Yes. So it has a lot to do with their mindsets. You know what goes on in their head. For some people, rape is just about sex, but there are other types of it. There are various types of rape. So in order to understand why people rape, you need to know the different types of rape. So there are different types of rape. In some countries, they may not exist according to their laws. So we have rapes like you have, as we said, marital rape is not acceptable in India right now. But you We'll talk have about marital marital. rape. There are many questions say popping up about the marital rape. I'll take that question. There are questions about the rape towards the man as well. I will take these questions. The people asking. Yes, Mr. Shara. Please Okay, continue. so you have marital rape, you have date rape, you have gang rape, you have serial rape, and you have certain types of perpetrators that fit into those categories, right? So the main types of rapists that you get that is easy to understand is according to Groth. Nicholas Groth, who was a psychologist, came up with these types of rapists. Okay, so the three major categories would be your angry rapist, your power rapist, and your sadistic rapist. And a lot of other criminologists and theorists also subdivide those into different categories. Okay, but those are the three main rapist groups. Now, your angry rapist is somebody who is just generally angry at the world, right? He's out there to teach somebody a lesson. When he gets angry, somebody irritates him, he has a family conflict, he goes out and he finds any victim and he rapes them.
Now, he is not violent, but he will use enough, what should I say, not like a weapon, but he will use enough power over his victim just to get her to comply to what he wants. He's not there to actually injure her in any way, but he wants to just get rid of that anger. Then your power rapist is somebody who will use more force. He wants to exert his power over his victim. Okay? And your sadistic rapist is your worst type of rapist. He's your most dangerous rapist, because this is a rapist who uses planning. In which category you will keep the Nirbhaya rape case culprits? That which of these category were they sadistic or what type they were? Yes, they were opportunistic, but they were also sadistic because they inserted objects into her. They tortured her. Okay. Mr. Sandeep, do you have something to say? आप कुछ कहना चाहेंगे निर्भया केस के रेपिस्ट के बारे में कि वो क्या थे? Opportunist या sadistic या क्या? I believe, Dr. Sharma, it has already been settled by Supreme Court. They all are being executed, so there is nothing left to say. But see, मेरा point इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है. जैसे इशारा ने बताया कि there are different kind of rape. Even in the IPC we consider and see, if we go with the POCSO Act, अगर POCSO Act देखेंगे तो हमने उसमें sexual जो attacks हैं, assault को भी हमने different categories में बांटा है, right? We are having sexual assault, we are having penetrative sexual assault, we are having aggravated penetrative sexual assault. So we are having different kind of categories. And even in the IPC, we are having gang rapes, we are having repeated offenders, we are having digital rapes and all these things, right? The problem is, see, as per me, but you will be surprised to know, Dr. Sharma, Ishara is talking about things in India that like the patriarchy and all these things. As per the records of the NCRB and as per the records of the other institutions of world, the rape rate in India is much lower in comparison to US. Is that so, Ishara? 23%. The rate of rape crimes as per the see, if you can see, the population of India is very vast, right? So we are considering it into number. लेकिन अगर हम इसको एक ओवरऑल देखें, परसेंटेज के तौर पे देखें, तो इंडिया में सिर्फ जो क्राइम जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी बी वेरी प्रिसाइज, तकरीबन 5 से 6% रेट है. एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जितने रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्ट नहीं होते सर. आप ये देखिए, रिपोर्ट नहीं होते. हम इस बात पे आएंगे. अच्छा मिस इशारा, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. Okay, just a second. Like coming back to the rape statistics by the NCRB, they estimated that there were like some 33,000 rapes. Okay, now when you look at that statistic and you compare it to world statistics, it's around the same. They're giving the same kind of report, but it cannot be true because in a vast country like India, where the population is like 1.4 billion people, 33,000 rapes is highly unlikely. It is more than that because due to a lot of underreporting and misreporting under the different IPC codes of India. Sometimes, like for instance, if you take a trafficking victim, that person is put under the trafficking IPC code, okay? They do not maybe account for the rape that happened to the person. So it's not included in your rape statistic. A person who's abducted. Abduction is, you abduct somebody with the intention to have sexual relations or to marry. That's the definition. So that may go under the abduction category and definitely not under the rape category if the person was raped. So there's a lot of, things that can go wrong with reporting of rape. Sorry to intervene. Just one thing, because yeah, sure. थोड़ा सा confusion हो जाएगा. See, Dr. Ishara, you are very much correct on some aspect कि इंडिया में separate heads और separate इनको offenses बनाया गया है. But जब चार्ज फ्रेम होता है ना कोर्ट्स के अंदर, तो सेपरेट ऑफेंसेस के लिए सेपरेट चार्ज ही फ्रेम होता है. इफ यू आर एब्डक्टिंग अ गर्ल फॉर द कमिटिंग ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप और सेक्सुअल असॉल्ट, तो वो एब्डक्शन का चार्ज तो लग ही रहा है उसके ऊपर, और एब्डक्शन विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप उसका चार्ज लग ही रहा है, साथ में आपको चार्ज 376 रेप का भी लग रहा है आपको. तो
इंडिया में ठीक है, ऑफेंसेस अलग अलग है, डेफिनेशन, बिकॉज आई एम अ डिफेंस लॉयर, आई एम नॉट अ Okay. प्रोसिक्यूटिंग, I'm not a government lawyer, I'm not a prosecution lawyer, I am a defense lawyer, so I know how system works and how prosecution works and how defense works. तो पर एक बात ऐसा तो नहीं, है जैसे कि ये डेफिनेटली है कि जो रिपोर्टिंग होती है रेप केसेस की बहुत कम होती है। Dr. Sharma, see, ये I have done my I have done my masters in business management, right? And I know जब हमने statistics पढ़ा था तो statistics में एक बात कही जाती है कि दुनिया में 3 तरह के झूठ होते हैं, एक झूठ, एक सफेद झूठ और तीसरे स्टैटिस्टिक। यू कैन यूज इट इन एनी मैनर। आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिवली भी उठा सकते हो। तो अभी जो एक स्टैटिस्टिक, झूठ चल रहा है मार्केट में, मार्केट में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा झूठ है वो? And also, like if you look at the statistics worldwide, less than 40% of people report rapes. That's all over the world. Less yes, than 40% of people. So, and that's for many reasons why they don't report the rape. And that also needs to be explored. Why women don't report the rape. Ishara, we have to take into consideration about the viewers also. There is a viewer who is asking, I think drugs has a huge role in rapes, though it is there. But do only the drugs has a huge role, or there is something behind that? is, is this to me or? Yeah. Miss Ishara will answer first, and then, of course, say advocate Sandeep ji will. Okay. In trafficking cases, yes, drugs plays a major role because in order to control the victims, they have to drug them, keep them addicted to drugs and alcohol. So that is important there. But in your general cases where people are raped, they not necessarily would be under the influence of alcohol or drugs. A lot of them know exactly what they are doing according to the type that of category that they fall into. Now, with Groth's categories of rapists, he puts them into classification by the amount of aggression that they use about and their behavior and their motivations. So this is how they are categorized, but does not mean that drugs will always be a part of their act. Yes. Especially like with the sadistic rapist, he's in his full senses. He knows exactly what he's doing, and he plans his actions. He's meticulous in what he does. He will stalk his victim and he will seek a particular type of victim. And then he will bind and torture and over a period of time. Okay, and that's how he operates. But other rapists will just subdue the victim or intimidate the victim by either verbally intimidating them or by using a little bit of force, and some will also use a weapon of some sort to threaten the victim into submission. So it's not always that it's going to be alcohol or drugs involved. जी संदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? I completely in agreement with what Ishara said. She's absolutely on the right track. But one thing I would like to add in this thing. It is not about the drug. हिंदी में सर आपसे हिंदी में उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत लोगों के वो आ रहे हैं। इशारा ने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला और मैं अपना पूरा एग्रीमेंट उनके साथ रखता हूँ। बट सिर्फ ड्रग्स को हम ये बोलते हैं, सी एज इशारा सेट की बहुत अलग अलग तरह के ऑफेंडर्स होते हैं। तो ड्रग्स आई थिंक जो इशारा ने कैटेगरी बताई थी सेडक्टिव रेपिस्ट की, उसमें तो आप उसमें रख सकते हो। बट इफ यू आर इन एंगर, इफ यू आर डूइंग इट फॉर द बॉयल फॉर सम सॉर्ट ऑफ रिवेंज, सम सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ अवेंज, यू वांट टू अवेंज समथिंग, उस केस में ड्रग्स को आप नहीं ला सकते। बिकॉज एज इशारा सेट की उसके लिए आप बहुत मेटिकुलसली काम करते हो कि कब वो जा रही है, कब वो आ रही है, कब आपको उसको ट्रैक करना है, कब किस तरह आपको उसको सेड्यूस करना है, किस उसको बहलाना फुसलाना है। तो उसमें ड्रग्स का इतना बड़ा रोल नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी पिछले 12-13 साल की प्रैक्टिस में मैंने बहुत केसेस करे रेप एक्यूज की तरफ से, लेकिन मैंने आज तक कभी डिफेंस लिया नहीं कि मैंने इसलिए रेप कर दिया क्योंकि मैंने नशा किया हुआ है। बिकॉज इट इज काइंड ऑफ एडमिशन एंड दैट इज, और आईपीसी में इसकी कोई जगह नहीं है कि मैंने खुद नशा किया हुआ था तो मैं रेप कर सकता हूँ, ये कोई डिफेंस होता भी नहीं। Like, drugs will feature, sorry, Dr. Bhupe, but drugs will feature like in the category of date rape. It's a modern trend now, date rape, where a woman goes to a club and her drink is spiked or her food is spiked, and then the next minute she knows, she finds herself in a situation that she cannot remember what happened to her, but she has been raped.
And those drugs, forensically, that they disappear. All those traces of those drugs disappear, the date rape drugs. But under those circumstances, under date rape, yes, drugs will be used. So that's why, young women, when they go out to clubs and stuff, be careful. Don't leave your food and your drinks unattended, because there are, predators out there, because rape is a predatory thing. They seek the most vulnerable and weakest of people to attack. That is why they go after children and young women or old women, because they cannot be, they will not overpower them in any way. The rapist will overpower them. They will intimidate them. Children, we teach children to respect adults and to respect police officers and teachers and priests and all that. But today you cannot even trust these people, because even they are perpetrating rape. Not all police officers, not all judges, not all teachers, but it is happening. It's happening also within the family system, where parents are actually abusing their children. Siblings are raping their own, sisters and cousins and things like that. So who do you trust? How do you teach your child then who to trust? So those are issues that also need to be explored. And the best way to teach them how to trust, who to trust, is for them to use their intuition. Teach them how to use that fight and flight response system. If something scares them, if something is not sitting well with you, be aware of your surroundings. Then you should seek help or get out of that situation. Because today you can't trust anybody. Leaving your child with the neighbor just for a minute or for an hour just to go run an errand, that could be problematic. That's when your child, we know of so many cases. I mean, we know there are so many celebrity cases, high profile cases. But there are masses who are being raped in this way, and we don't hear about it. We've heard about the Katwa case, Asifa, 8 years old, gang raped. We heard about the Hathras rape. We heard about Nirbhaya's rape. But there are many more people who are not in the limelight. We don't hear of those cases. And a lot of rape in India is perpetrated as gang rape. That's the culture, it's gang rape. संदीप जी, हमारे पास समय, हमको बहुत सारी बातें करनी है. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मिस इशारा, आई वुड लाइक टू beg your pardon here. Sure. So this is a question to संदीप जी. भारत की गवर्नमेंट ने रेप के लिए स्ट्रिंजेंट लॉज क्यों नहीं बनाए अभी तक? ये एक क्वेश्चन है. But I know there are laws. Can you elaborate on that? डॉक्टर शर्मा, ये कहना गलत होगा कि भारत में लॉज स्ट्रिंजेंट नहीं है. यू वुड बी सरप्राइज, रेप केसेस में हमारे यहाँ डेथ पनिशमेंट भी है. 2018 में ही इंडिया में सेक्शन 376 को अमेंड किया गया था, जिसमें सेक्शन 376 कैपिटल ए बी एंड कैपिटल डी बी को जोड़ा गया था, जिसमें था कि इफ यू आर कमिटिंग अ रेप विद अ गर्ल अंडर 12 years of age, और इफ यू आर कमिटिंग अ गैंग रेप अंडर द 12 ऑन अ गर्ल जो 12 साल से छोटी है, यू कैन बी पनिश्ड विद द कैपिटल पनिशमेंट. आपको सजाए मौत हो सकती है. पॉक्सो एक्ट भी अमेंड हुआ था. जब निर्भया गैंग रेप के बाद 2013 में हमारा पूरा क्रिमिनल लॉ अमेंड हुआ, उस वक्त भी अगर आप रेप करते हो, किसी लड़की की डेथ कॉज कर देते हो या कुछ ऐसा करते हो कि लड़की जीवन भर कोमा में रहे या वेजिटेटिव स्टेज में रहे, तो उस केस में भी आपको डेथ पनिशमेंट हो सकती है. मिनिमम 20 years की पनिशमेंट है, और लाइफ पनिशमेंट का मतलब यहाँ पे पनिशमेंट टिल योर लास्ट ब्रेथ. आप जीवन भर जेल से बाहर नहीं आएंगे. तो शायद इससे स्ट्रिंजेंट लॉज हो नहीं सकते हैं. बट आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग. लॉर्ड डेनिंग की एक किताब है, उसमें उन्होंने बहुत एक अच्छी लाइन लिखी है, मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ, कि जिस सोसाइटी में लॉज बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं ना, उसका मतलब ये कि सोसाइटी जो है ना, वो सॉबर नहीं है, वो सिविलाइज नहीं है. क्योंकि तभी आप उनको रोकने के लिए स्ट्रिंजेंट लॉज लेके आते हो. इट इज नॉट अबाउट लॉ, भूपेश, बिकॉज सी आई हैव बीन इनटू प्रैक्टिस. आई नो मर्डर केसेस में तो हमेशा से डेथ पनिशमेंट रही है ना इंडिया में. 1860 से जब से आईपीसी बना है, तो क्या मर्डर केस रुके हैं? क्या नहीं रुके हैं ना. लॉ कैन ओनली प्रिवेंट,
लॉ कैन ओनली डिटेक्ट बट कैन नेवर प्रिवेंट. प्रिवेंशन तो मोरालिटी से आएगा, एजुकेशन से आएगा, वैल्यूज से आएगा, ट्रेडिशन से आएगा. यही है व्हाट व्हाई एज इशारा सेड कि आज हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते. क्यों? मैं एक छोटे से गांव में हरियाणा में पैदा हुआ, वहां पला बढ़ा हूँ. हमारे यहाँ इतना होता था कि हम पूरे पूरे दिन गली मोहल्ले में किसी के घर में जाके बैठ जाते थे, खा पी के भी आ जाते थे. प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम हुई जब ये समाज टूटा, जब एक घर के 5 घर बनने शुरू हुए, 5 घरों का मोहल्ला बनना शुरू हुआ. तो प्रॉब्लम क्या हुई कि फिर वहां प्यार नहीं रहा, वहां अपनापन नहीं रहा, वहां पे ट्रस्ट वैल्यूज नहीं रहे. तो जब ट्रस्ट वैल्यूज ही नहीं रहे तो ट्रस्ट भी नहीं रहा. जहां अपनापन नहीं रहा वहां पे फिर अपनत्व भी नहीं रहा. तो प्रॉब्लम इज नॉट विद द लॉज. लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट है, एंड आई डोंट नो कि इंडिया में जितने लॉ स्ट्रिंजेंट है, शायद ये अरेबियन कंट्रीज और शरिया लॉज के अलावा उतने रेप के ऊपर उतने स्ट्रिंजेंट लॉज कहीं नहीं है जितने इंडिया में. लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा मोरालिटी. ये 2 प्रॉब्लम्स है इंडिया में जिसकी वजह रेप के इश्यूज हम डेली बेसिस पे हम देखते हैं. Yes, I agree with the fact that with crime and punishment in criminology, the crimes that are committed that are so heinous, yes, maybe you need the death penalty, but it has been proven that the death penalty itself is not a good deterrent, is not a total deterrent to stop people from committing crimes. Okay, when a crime is committed, the problem is that it must be investigated immediately. The punishment must be immediate. Okay, now with the great backlog in cases in India, there's like some 5 million cases backlog. That's going to take time to sort out. And with rape victims, when this happens, the case must be investigated immediately. Evidence must be collected immediately, and it must go to court immediately. Like, you should have these fast track courts to deal with these cases, because evidence is so important for these rape victims, and they cannot sit in the justice system for years. They need immediate justice. Yes. दोस्तों मैं सबको बता दूं, हम यहाँ पे कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को काट नहीं रहे हैं. वी आर पुटिंग अवर फ्रंट फॉरवर्ड, सो एटलीस्ट वी कैन डू. देखिए, अच्छा, एडवोकेट संदीप जी बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, मिस इशारा जी भी क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, और मैं भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं. तो हम यहाँ अपनी अपनी तरीके से इस चीज को इरेडिकेट करने की, आप में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. ये संदीप जी एक हमारे व्यूअर हैं, प्ले विद विहान करके, इनका बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं. मैं एक क्वेश्चन इनका पहला लूंगा. रेप इज कमिटेड टुवर्ड मेन आल्सो, ये कहां तक सही है और क्या चीज है? विहान, आप क्वेश्चन आपका बहुत सही है, बट आई एम सॉरी बिकॉज एज पर इंडियन लॉज अभी तक, अगर आप जब सेक्शन 375 जहां आईपीसी में जहां रेप की डेफिनेशन अगर आप उसको खोलेंगे ना, पहला वर्ड ही वो है, द मेल. इफ अ मेल कमिट्स दिस थिंग टू अ फीमेल, दैट इज अ रेप. तो मेल अभी अब वो जेंडर न्यूट्रल ऑफेंसेस नहीं है. सेक्सुअल ऑफेंसेस हमारे यहाँ यही माना जाता है कि मेल ही करता है फीमेल की तरफ. बट इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जब पॉक्सो एक्ट बना, तो इफ यू आर अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके साथ अगर कुछ भी होता है, मान लो एक 17 साल के लड़के को एक 25 साल की लड़की अगर फिजिकल रिलेशन मेंटेन कर रही है, तो देन द गर्ल शैल बी लायबल अंडर द पॉक्सो एक्ट. ठीक है. लेकिन अगर लड़का 18 साल से ऊपर है तो फिर तो उसका कुछ नहीं हो सकता. बट अभी डोंट लूज होप, आईपीसी अभी आईपीसी इंडिया का क्रिमिनल लॉ अभी फिर से रिवाइज हो रहा है. इट माइट बी पॉसिबल विद इन 2-3 इयर्स यू विल हैव न्यू आईपीसी इन योर हैंड, न्यू सीआरपीसी इन योर हैंड. तो हो सकता है कि रेप के जो ऑफेंसेस हैं या जो सेक्शन 354 जो आउटरेजिंग द मोडेस्टीज के ऑफेंसेस हैं, वो शायद जेंडर न्यूट्रल हो जाए. वहां पे फिर शायद लड़कों के साथ भी जब ये ऑफेंस हो तो वहां पर उनके पास भी एक रेमेडी हो उस चीज के अगेंस्ट रिपोर्ट करने की. बट आज की स्थिति ये है कि अगर कोई लड़का 18 साल से ज्यादा है, उसके साथ अगर कुछ भी होता है सेक्सुअल अब्यूज, तो ऑफेंस नहीं माना जाता. हाँ, अगर बट 377 में अगर आप जाते हो कि अगर वो कार्नल इंटरकोर्स में अगर आप जाते हो, इफ यू आर गोइंग सेक्सुअल रिलेशनशिप अगेंस्ट द नेचर, तो आप उसमें जा सकते हो. बट 377 भी सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है. इवन इफ यू आर कमिटिंग अ कार्नल इंटरकोर्स विद अ गर्ल, तो वो भी सेक्शन 377 में ही आता है. Yeah, I was just gonna ask you about section 377.
of unnatural, sexual relations like same-sex What is the rape. situation in US? Do you consider men as the rape victim? Yeah, Yes, sorry. there are. Men can be raped. I mean, if you look at it, in prison, men are raped. Am I right? Yeah. Men are raped. They are raped by other men, by other prisoners in their cells. As So per it the does Indian, exist, but as not per to the the extent that woman rape exists. as per the Indian law, rape is only associated with a female. Yes, You can yes, never, a man can be sodomized. Rape नहीं हो yes. सकता, sodomy That's हो what they सकती है. call it. थोड़ा सा Sodomy चेंज होना or चाहिए ना sexual सर? assault, depending on how the country defines it. आंसर में मैंने कहा कि अभी क्रिमिनल लॉ रिवाइज हो रहा है. अभी बहुत जल्दी आपको शायद मिल भी जाएगा कि आपसे भी, एक जनरल पब्लिक से भी आप उनके सजेशंस मांगे जाएंगे लॉज अमेंड करने के लिए. हो सकता है कि ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं ये जेंडर न्यूट्रल हो जाए. Yes, और yes. हो सकता है अभी आज. सर क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे हैं, व्यूअर्स के भी, अपने भी. पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मैं पूछता हूँ. मिस्टर शारा, फर्स्ट टू यू, देन आई विल कम टू से एडवोकेट संदीप जी. Okay, like पोर्नोग्राफी. pornography, it plays a big deal when it comes to rape, especially with your power rapists and your sadistic rapists, because they want to act out a certain fantasy. So they indulge a lot in pornography, child pornography, and adult woman pornography. These, in order to achieve that internal gratification, they keep raping. So these are your serial rapists, your sadistic rapists. They have to perpetrate all this. It's like a ritual to them. So it's very important. So the more pornography men watch, the more fantasies they have, and then they will not be able to carry it out with maybe their spouses. So they go out of their family system and they perpetrate it against strangers. Now, remember, as I said, there are different kinds of rape, and one of them is stranger rape. The other one, most rape are acquaintance rapes. 94% of rape victims know their rapist. Okay, and the acquaintance rape, and then you have stranger rape. People who are raped by people that are unknown to them, and these are जी, usually your sadistic rapists and your यस. opportunistic rapists संदीप and जी, आप all क्या that. कहेंगे इस बारे में? मैं आपसे एक पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि ये संदीप जी आपसे क्वेश्चन रहेगा कि पोर्नोग्राफी देखने के बाद, मैं सभी माताओं से, बहनों से यहाँ पे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ. ये डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास, मैं उसमें से पढ़ के बोल रहा हूँ कुछ चीज. पोर्नोग्राफी में संदीप जी ये दिखाया जा रहा है, द विमेन इज ऑलवेज प्लीजेंट, द विमेन इज गेटिंग ग्रेटिफिकेशन. वो खुश है, वो अच्छा दिखाया जा रहा है. तो ये चीज कहीं ना कहीं पुरुषों के दिमाग पे, मेल्स के दिमाग पे बहुत ज्यादा असर डालती है. आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाउ पोर्नोग्राफी इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रेप? देखिए डॉक्टर भूपेश, जो बात आप समझिए, पोर्नोग्राफी ऐसा, मेरे पास अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है, इतना परसेंटेज कुछ कर पा रही नहीं कर पा रही, बट मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं. और एक चीज आप, मुझे बहुत एक पेक्यूलियर सर्कमस्टांस उनमें नजर आया कि जो पोर्नोग्राफी से जो रेप की तरफ जब आप टेंड करते हो या तरफ जाते हो, तो जनरली ये एज ग्रुप होता है 15 से 22 साल के. जी, के हार्मोन्स अभी नए या तो बन रहे होते हैं, बन चुके होते हैं. आप 28 साल, 26 साल, 30 साल के आदमी से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो रेप, वो पोर्नोग्राफी देख करके की वजह से रेप के जा रहा है. ये बहुत जो एडोलेसेंट एज है, जो बिल्कुल नए नए जवान होते हैं, उनके बीच का मुद्दा है. इतना मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है 10-12 साल की प्रैक्टिस. दूसरी बात, आपने एक बात बोली कि पोर्नोग्राफी में फीमेल को दिखाया जाता है. सी, हमें पता है इट इज अ फिक्शन, राइट? वो सिर्फ एक फिक्शन है. और उन्हें ये भी मालूम है कि जो क्लास इस चीज को ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है, वो कौन है? वो अपोजिट सेक्स. तो उनको उनके दिमाग में बिठाने के लिए कि ये चीज अगर आप करोगे तो आपके अपोजिट सेक्स को, वो या जो आपके अपोजिट जेंडर का जो इंसान है, वो उसको एंजॉय कर रहा है, उसको फील कर रहा है, उससे अपने आप को सेटिस्फाई फील कर रहा है, तभी तो आप उसको देखोगे. दैट इज द, एज इशारा सेड, वही तो ग्रेटिफिकेशन, मेंटल ग्रेटिफिकेशन जो आपको होती है कि हाँ, ये चीज मैं भी अगर आपके साथ, उसको भी अच्छा लगेगा, तो मुझे काम करने की परमिशन मिल जाएगी.
डाल रही है, बट हाँ माइंड को पोल्यूट तो कर ही रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एजुकेशन और मोरालिटी की बहुत जरूरत है। एजुकेशन और मोरालिटी की इसीलिए जरूरत है कि वो आपके माइंड को पोल्यूट तो एक्चुअली कर ही रही है, Yes, राइट? definitely, it's a degradation of morals and values within the family systems. पता है You या know, बुरा people क्या लगता है who जी indulge in pornography. Remember, some of them do it willingly; it's a business, right? But some of the victims that are making those pornographic movies, they are victims who are being forced to do it, like your trafficking victims, right? They are forced into pornography, into prostitution, in all these things. So you have to consider the consequence, I mean the circumstances of these people that are making the pornography movies. They are victims. Most of them are victims but that are most of being them Exactly. forced to are make it. actually, say, if we take the recent case, I would not like to name the person. Say everybody knows who have been, say, abducted for this case of pornography. Uh, yes, Mm-hmm. many of them were victims who just for money or just for say, something have indulged in this. सॉरी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ सॉरी वो इस चीज में आई और बाद में पर ये पता चला कि देवर प्रॉमिस्ड उनको प्रॉमिस किया गया था किसी और चीज के लिए एंड देन दे वर पुट इनटू दिस बिजनेस नाउ द थिंग इज दैट अगर पोर्नोग्राफी लीगलाइज कर दी जाती है सारी वेबसाइट्स खोल दी जाती हैं मेरा बहुत ही खुला खुला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या ये रेप को रोकेगा इशारा It's आई not going अंडरस्टैंड to stop rape. I mean, ओके they say if you decriminalize prostitution, is that going to stop rape? It's not, because the different संदीप जी आप क्या mindsets कहना of चाहेंगे इस rapists बारे में will still go संदीप जी after different people. They're not going to go after your sex workers only. जी, मेरा इसमें ओपिनियन थोड़ा अलग है। इट्स नॉट सी मैंने आपको शुरू में क्या बोला, लॉ सिर्फ आपको डिटेक्ट करता है। आपने ऑफेंस करा है, लॉ आपको ढूंढ लेगा, लॉ आपको पनिश कर देगा। लॉ कभी भी प्रिवेंट कर नहीं सकता है। प्रिवेंशन के लिए यू नीड टू हैव मोरालिटी एंड यू नीड टू हैव एजुकेशन। लाइकवाइज अगर मैं हूँ मेरे गली में हर घर में एक दारू का ठेका भी खोल दो तो भी मैं उस तरफ जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे वो नहीं करना है, मेरी मोरालिटी अलाउ नहीं करती, राइट? और जिसको करना है वो अगर दिल्ली में ड्राई डे तो नोएडा से जाके फरीदाबाद से जाके दारू उठा के ले आते, नहीं पर राइट? ये भी तो बात है अगर हर घर में ऐसा खुलेगा बहुत ज्यादा होगा तो मैं देखूंगा अरे भाई ये सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं एक क्राइम दैट थ्योरी इज होती है दैट इज द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी। यही तो मोरालिटी काम आती है कि जो काम सब कर रहे हैं जरूरी नहीं सी परपेचुअल। अगर कोई एक काम परपेचुअल तरीके से होते आ रहा है या सब लोग कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो सही हो गया, वो गलत नहीं है, वो गलत है। यही तो आपकी मोरालिटी आपको रोकती है। मैं तभी तो कह रहा हूँ जिस दिन परिवार टूटे, जिस दिन सोसाइटी न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ बढ़ी, हर घर में आपको ये समस्या सुनाई देने लगी। आज से 20-30 साल पहले आपको नहीं सुनाई देती थी। ऐसा नहीं था कि उस वक्त ये मतलब अंडर रिपोर्टिंग होता था, होते थे उस वक्त भी, बट इतने बड़े पैमाने पे नहीं होते कि आप 6 महीने की बच्ची को भी आप सेव नहीं कर पा रहे हो और 80 साल की ओल्ड लेडी को भी सेव नहीं कर पा रहे हो, राइट? ये तो बहुत ही अजीब बात है problem is not with the laws, problem is not with the deterrent, problem is the implementation of law. Number one thing, as I told you that my the dissertation of my LLM was my research was the crimes in investigation and how forensic can help in the increase the rate of conviction. प्रॉब्लम क्या आती है ना, इवन कि जब जब एक ऑफेंस होता है तो पहली बात तो हमारी पुलिस इतनी इक्विप्ड नहीं है कि वो ऑफेंस वो क्या कहते हैं उसको एविडेंसेस को, फोरेंसिक एविडेंसेस को, साइंटिफिक एविडेंसेस को, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को तरीके से कलेक्ट कर पाए। ये तो हमने देख लिया अभी सुशांत के केस में भी और बाकी सब केस में भी हम देखते ही आ रहे हैं उनकी केस में आपने देखा, निर्भया गैंगरेप में यू वुड बी सरप्राइज, पता है सबसे प्राइम एविडेंस क्या था? प्राइम एविडेंस था एक एक्यूज को निर्भया ने अपने दांतों से काटा था और वो निशान उसके हाथ पे था। तो वे डेंटल जब निर्भया के डेंचर का वो लिया गया और जब उससे मिलान करा गया तो दैट वाज अ की एविडेंस कि देखो ये फोरेंसिक एविडेंस मिला है। तो इस तरीके की हमारे पास इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। दूसरी बात, नंबर ऑफ जजेस कम है। तीसरी बात, जो हमारा सिस्टम है, जो कोर्ट्स का सिस्टम है, आज स्ट्राइक हो गई, आज हॉलीडे है, आज जजेस ट्रांसफर हो गए और उसके बाद क्या होता है कि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इशारा ने भी बोली, प्रैक्टिकली लोग इसको नहीं समझते हैं। वो कह देते हैं कि कोर्ट्स में मामले पेंडिंग है, कोर्ट्स काम नहीं कर रही हैं। उनको रियलिटी पता है इसके पीछे क्या? डॉक्टर साहब और आपके दर्शक भी इस बात को आज समझें,
कि सिर्फ जजेस की कमी नहीं है, लॉयर्स की कमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना कि वी आर हैविंग अ जुडिशियल सिस्टम जो स्टेजेस पर है। जैसे मान लो आज एक रेप केस आपकी कोर्ट में फाइल हुआ, आपने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करी कि भाई मैं तो जुवेनाइल था जिसे मैंने रेप किया, ठीक है, मेरा केस इस कोर्ट में ट्राई नहीं हो सकता, मुझे भेजो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने। कोर्ट ने बोला नहीं नहीं जुवेनाइल नहीं हो। अब जैसे एक एप्लीकेशन आपकी डिसाइड हुई, आपने क्या करा, आप चले गए हाईकोर्ट के पास। जब हाईकोर्ट ने डिसाइड करी, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास। जब तक आपकी एप्लीकेशन डिसाइड होती तब तक 3 साल तक नीचे केस अटका पड़ा रहता है। जब वो एप्लीकेशन डिसाइड होकर वापस आती है, फिर एक दूसरी एप्लीकेशन आ जाती है। तो प्रॉब्लम इज नॉट विथ कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम काम करता है, बट प्रॉब्लम है कि इतने ज्यादा लूप होल्स है ना, जिसको इवन आई एम अ डिफेंस लॉयर, आई शुड नॉट से ऑल दिस थिंग्स, हम भी यूज करते हैं और इसी से हम वी आर रनिंग आवर ब्रेड एंड बटर। बट प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पोर्नोग्राफी को आप लीगलाइज कर दोगे, इट इज नॉट गोना हेल्प, बट ये तो चीज को थोड़ा और वर्स ही करेगा। क्योंकि जब 10 Miss बच्चे Ishara, question. Miss Ishara, there is a question about the same-sex rape. Would you like to say comment on this? Well, same-sex rapes. Well, with the law, as we say in India, there is no law right now. Section 377 deals with unnatural sexual activity, and soon they will, revise that law and maybe bring something new. But around the world, yes, we do have same-sex rapes. And there are laws against it, but that varies as well. So it's more common, as we say, when we talk about the definition of rape, depending on the country you live in. Rape is perpetrated by a man on a woman, and sodomy is perpetrated against a man and a man, Man or and a man. sexual assault. Some countries call it sexual assault, which is a broader definition of the rape. But basically, rape can only occur between a man and a woman. जी, He's संदीप जी, unwilling. The woman is unwilling and with no consent. जो डॉक्टर जो इशारा ने बोला उसमें सिर्फ इतना सा ऐड करूंगा, 377 सेम सेक्स रिलेशनशिप की बात करता है, ठीक है। नवतेज जोहर की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उसको डीक्रिमिनलाइज करा, बट वो डीक्रिमिनलाइज सिर्फ कंसेंशुअल पार्टीज के लिए। अगर कोई एक मेजर लड़का दूसरे लड़के के ऊपर अगर सोडोमी करता है, दैट इज स्टिल एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 377 है। बट ठीक है, अगर इवन इफ यू आर कमिटिंग दैट, अगर इफ यू आर डूइंग कार्नल इंटरकोर्स विद अ फीमेल एज वेल, तो वो भी 377 में ही आता है। ओके। तो वो सिर्फ, और अगर लड़का 18 साल से छोटा है तो फिर तो पॉक्सो एक्ट में वो आ ही जाएगा, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट लड़के ने कराओ लड़के के ऊपर या लड़की ने कराओ। इफ द मेल हु इज अंडर 18 इयर्स ऑफ एज इज अ विक्टिम, तो उसको करने वाला कोई भी हो, वो रेप के, वो पॉक्सो के अंदर वो फिट हो गया। And as much as we want to blame government all the time, make the laws more stringent and all this, we also have a social responsibility. We also have a stake in this. It is our duty as parents, as society, to also prevent rape, to educate the public, to educate our children, to make it a safer environment for all our children. Go out in the community and do something about it. Don't just say, well, the government is not doing this. The government makes rules. It delegates those rules throughout the criminal justice system, to the courts, to the police, to the corrections, and then also to society. So do your bit as well. It's not just the government that should be held responsible. यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप दोनों की स्क्रीन पर, मे बी आई विल रीड इट आउट इन हिंदी। सर, कई बार रेप केस झूठे होते हैं, और ये मैंने भी देखा है संदीप जी, बहुत बार रेप केस, मैं आपको अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, किसी पे पड़ोसी पे उधार चाहिए था कुछ, तो उधार न मांगने चले जाएं, तो उसने अपने कपड़े फाड़ लिए कि हमारे पास आए और इन्होंने इस तरीके से किया। आप उसमें 2 पड़ोसी लड़ाई कर रहे थे, तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में मैं लोगों को बता दूं, खैर जो मैं जानता हूं कि फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह अब तो सब कुछ होता है, पर पहले इतना कुछ नहीं था। बट डेफिनेटली एक आदमी की इमेज तो बिगड़ ही जाती है। क्या संदीप जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? संदीप जी, या आई थिंक, जी संदीप जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। आपको पहले ऐसे झूठे केसेस में क्या होना चाहिए? जी।
शर्मा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं एक डिफेंस लॉयर की तरह बात नहीं करूंगा, मैं एक जनरल व्यक्ति की तरह बात करूंगा। तो हम वी आर हैविंग अ सेट ऑफ माइंड कि अगर किसी लड़के के ऊपर ये आरोप लग गया तो अब चाहे कितना भी सच्चा हो, कितना भी झूठा हो, इवन अगर कोर्ट से कन्विक्शन ना भी हो, कोर्ट से अगर वो एक्विटल भी ले आए, तब भी सोसाइटी में हम यही मानते हैं कि यार ये वही है जिसके ऊपर आरोप लगा था। हम कहते हैं जजेस वालों को पैसे दे दिए, जजेस को उसके साथ सेटिंग कर ली और ये छूट के आ गया। नंबर वन, हम आता हूँ लीगल पहलू के ऊपर। आपने जो बोला कि आज ही मेरे पास एक केस में ब्रीफ आई है जिसमें मकान मालिक ने अपने किराएदार को मकान खाली करने के लिए बोला, तो किराएदार की लड़की ने सेम वही करा, पुलिस पे कंप्लेंट करी और एफआईआर रजिस्टर करा के मकान मालिक के बेटे को, आज ही ब्रीफ आई है मेरे पास, सुबह की, सुबह की बता रहा हूँ मैं। तो अब इसमें होता क्या है इस तरह केसेस में, देखो अगर आपका एक्विटल हो गया ऑन द मैरिज, अगर आपका एक्विटल हो गया तो आपके पास बहुत से आप कंपनसेशन के लिए जा सकते हैं, आप डैमेजेस के लिए जा सकते हैं, आप डेफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं लड़की के अगेंस्ट, बहुत सारे। इवन कोर्ट्स भी सुओ मोटो लड़की के अगेंस्ट सेक्शन 340 सीआरपीसी के अंदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि झूठ बोल के वो बच जाएंगे या झूठ बोल के निकल जाएंगे, बट प्रॉब्लम है ना, हम लड़ते नहीं है। लॉस आ रहे हैं, हमारे पास राइट्स आ रहे हैं, हम लड़ते नहीं है। हम बहुत जल्दी कहते ठीक है यार, कोर्ट ने छोड़ दिया, पीछा छूटा, बाहर निकलो, इन सब चीजें। लेकिन अगर आप पुट फॉरवर्ड करोगे, अपने स्टेप को आप आगे लोगे, तो रेमेडीज लॉ में बहुत ज्यादा है। और इसीलिए हम वकील लोग फिर पैसे भी लेते हैं उन्हीं रेमेडीज को एक्सरसाइज करके। Yes, women who do such things, who accuse a man of rape, they do it for vindictive reasons. Okay, they just want to destroy either his character or something, or extract some kind of reward from him. Maybe some kind of favor for him, so that they can blackmail them. But they don't realize that what they are doing can destroy a person's character totally, and the stigma remains with him no matter what. Even as if he is acquitted, that will still be with him. And some people are so severely affected by that, they will actually end up committing suicide because their character has been destroyed. They cannot walk around in public anymore with their head held high because they have this false rape charge stigma against them. So these women, they should be punished with maybe even a jail sentence and fines, and they should be made to make public apologies to the people that they have wronged. So it's not right for women to actually do that, falsely make an accusation against somebody, and that must be investigated properly. Let me add one more dimension in this thing. Yeah. जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि लड़का लड़की एक साथ रिलेशंस में थे, लड़के ने बैक स्टेप किया, तो लड़की ने रेप के एलिगेशंस लगा के लड़के को जेल भिजवा दिया। बट अगर ऐसा ही केस लड़के के साथ हो तो लड़की पीछे हट जाए, the guy has no remedy, लड़के के पास कोई रेमेडी होनी चाहिए ना, ये संदीप जी ऐसी होनी चाहिए ना, क्योंकि वो मुकेश के दर्द भरे गीत सुने, इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है उसके पास। बट आई एम होपिंग एंड आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि बहुत जल्दी ये सब चीजें एड्रेस होने वाली है। Okay. So I think we are about to finish it because it's a long time and we have taken most of the question. There is one more thing which I would like to take upon. There is something called as rape culture. Rape culture means, आपको मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे बाकी दो एक्सपर्ट जवाब देंगे कि विक्टिम को ब्लेम करना कि इसने ही पूछा था मुझसे करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने मुझे कॉल करके बुलाया कि मैं अकेली हूँ, आ जाओ, फॉर डेटिंग। क्या डेटिंग का मतलब ये समझ लेना कि मुझे लड़की उसलिए बुला रही है ये, और मैं बाद में बाद में इसको कोर्ट में यूज करूं कि मुझे तो बुलाया गया था, आई हैव बीन कॉल्ड बाय द गर्ल फॉर डेटिंग। सो what does dating in this mean? So have we created the rape culture like that if a girl is calling for dating, it means she is agreeing for sexual say consent or intercourse, something like that. Is that not
self-entitlement. You think just because somebody wants to date you or, calls you over to visit, then you have the right to take advantage of that lady or that person. That's a sense of self-entitlement. Just now, I mean, you don't have marital rape in India, but the fact that you have a wife doesn't mean then that when you come home, maybe you're drunk or under the influence, then you can beat your wife and brutally sexually assault her. So is that now okay So, within relationships? इसका Is it जवाब देंगे। okay? Is it okay for you to rape your girlfriend? मैं दोनों इशू Marital- वन बाय वन। पहले आपने डेटिंग के ऊपर बात की। देखो डॉक्टर शर्मा, बहुत क्लियर सी बात है और आपके दर्शक भी सुन लें, और खासकर लड़के। इवन गर्ल इज ए कंसेंसुअल पार्टी। जो भी आप कुछ कर रहे हैं वो लड़की की मर्जी से कर रहे हो, लेकिन अगर लड़की ने ये कह दिया कि दैट देयर वाज नो कंसेंट, सेक्शन 54 कैपिटल ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये माना जाएगा कि लड़की की कंसेंट नहीं थी। आप कितना भी कहते रहो कि लड़की ने फोन करा था, उसके लव लेटर दिखाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। उस दिन लड़की की कंसेंट नहीं थी, मतलब नहीं थी। इवन अ प्रोस्टिट्यूट इक्वल लॉ होना चाहिए ना, दोनों पार्टी के लिए इक्वल लॉ होना चाहिए। Consensual, yeah, it must be consensual. इन इंडिया, यू नो दिस थिंग। आप एक प्रोस्टिट्यूट के पास गए, आप ये नहीं कह सकते कि तो प्रोस्टिट्यूट रेप नहीं हो सकता। नो, जब आपने इसके साथ इंटरकोर्स किया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज नॉट दिस कंसेंटेड पार्टी। आपने रेप किया है, पहली बात। अब आते हैं आपकी दूसरी बात पे, जो आपने डेटिंग के बाद मैरिटल रेप की बात। देखो अगर सेक्शन 375 हम पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ कि अगर आपकी बीवी 16 साल से छोटी है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। सॉरी, अगर 16 साल से बड़ी है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट कोर्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में अभी कोर्ट्स ने उसको 16 साल को 18 साल बोल दिया है कि अगर आपकी बीवी 18 साल से छोटी है और अगर आप उसके साथ विदाउट कंसेंट अगर आप फिजिकल रिलेशन मेंटेन करते हो तो यू विल बी लायबल फॉर रेप। पहली चीज। दूसरी बात, अब आते हैं मैरिटल रेप 18 साल से ऊपर वालों पे। अब इसमें सोचने की ये है, मैरिटल रेप में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, लीगल, मैं एज अ लीगल एक्सपर्ट आपको बताऊं, सोसाइटी क्या कहती है, वो सब क्या कहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट। प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाए। Okay. Because you are consummating with your wife on regular basis. अप्रूव कैसे करोगे? सिर्फ एलिगेशन लगाना और प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करना इज नॉट द राइट थिंग। कन्विक्शन को भी अपहेल्ड करवाना है, कन्विक्शन को भी आपको लेना है, वो कैसे लोगे? तो आप कैसे प्रूव करोगे कि दैट आई वाज नॉट द कंसेंटेड पार्टी? अभी तो जैसे आप 498 डॉवरी लॉज का आप मिसयूज देख रहे हो आप इंडिया के अंदर, एंड दैट इज द रीजन कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इतना डाइल्यूट कर दिया कि अब 498 के केसेस में, डॉवरी के हरेसमेंट के केसेस में डायरेक्ट पुलिस अरेस्ट भी नहीं करती है, कोई अरेस्टिंग नहीं होती है। एंड दिस इज द रीजन, क्योंकि इतना ज्यादा मिसयूज हुआ इन चीजों का, और जिस तरीके से अब सेक्सुअल ऑफेंसेस का यूज हो रहा है। अगर आपने मैरिटल रेप को भी कर दिया तो इट विल बी, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट एक बात आप मानेंगे, इशारा आप भी मानेंगे, डॉक्टर साहब आप भी मानेंगे, हमारे यहाँ जो जेन्युइन विक्टिम होते हैं ना, वो तो सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जो उनके मिसयूज करने वाले, जो अब्यूज करने वाले होते हैं, मैं अक्सर कोर्ट्स में बात कहता हूँ अपने आर्गुमेंट्स के टाइम, दैट वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर मिसयूज कम्स बिफोर यूज एंड इवन अब्यूज कम्स बिफोर मिसयूज। वी एक्चुअली अब्यूज द थिंग, वी एक्चुअली अब्यूज द रेमेडीज। तो वो नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम उस मैरिटल रेप के कंसेप्ट से ये है कि बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगेगा इसका। आपने एलिगेशन लगा दिया, हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर हो गई, अब वो प्रोसिक्यूशन भुगत रहा है, 10 साल बाद उसको आपने बोल दिया कि नो 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 नो, ही इज नॉट गिल्टी, ही इज फ्री। अरे लेकिन 10 साल तक जो उसने सोशल स्टिग्मा झेला, अपनी नौकरियां खो दी, अपना पूरा करियर खराब कर दिया, उसको कौन रिकवर करेगा? उसको कैसे आप कंपनसेट करोगे? तो मैरिटल रेप एज पर माई व्यू इज नॉट द राइट थिंग, एटलीस्ट अभी यहाँ पर, अभी के लिए तो वो नहीं बनता। बाकी लेट द गवर्नमेंट डिसाइड, बट being a defense lawyer, I'm very worried। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हस्बैंड की तो लग जाएगी। यहाँ पर जो हमारी महिला मित्र देख रही हैं, जो हमारी बहनें देख रही हैं, वो ये ना समझे कि हम ये जो मैरिटल रेप की अगर किसी बात पे अगर हम मेल्स के लिए बात कर रहे हैं, मेल्स के फेवर बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मेल्स आपके भी घर में हैं, आपके भाई भी हैं और आपके पति भी हैं, आपके पिताजी भी हैं। तो मेल्स हर जगह हमारे, देखिए मेल और फीमेल दोनों एक सोसाइटी का बहुत ही बड़ा हिस्सा है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल के बिना कुछ है या फीमेल मेल के बिना कुछ है, दोनों ही एक जो हम कहते हैं जेंडर इक्वालिटी और जो बातें करते हैं वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लागू होती है, और किसी के ऊपर भी कोई भी केस हो सकता है। हाँ, पर किसी भी कानून का मिसयूज करना ये बहुत ही गलत है। मिस इशारा यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं। मिस इशारा, यू वांट टू से समथिंग? Yes. Rape is a very sensitive issue, and in order to prevent this kind of things happening in society, we need to take social responsibility. We need to inculcate in our children, in our family values and systems, that it is not acceptable to behave in certain manners. Especially teach this to your male children in your family, to your husbands, to your niece, to your nephews, to the children in the family. Teach them that you have to respect the dignity of women. If a child, most learning is done not by verbal learning, it's observational learning. So if you as a parent set this example that it's okay to smack mom around, or the sister around, or beat them, or sexually attack them or anything, then that child will grow up doing the same thing. So start teaching these values in the family. Don't say that rely on the law only. Teach it in your religious institutions. Teach it in the educational system. These are your legal interventions that you can do, your social interventions. Don't just say, oh, it's the government's problem, they're not doing enough, etc. It's your duty as a parent to inform your children. Children are very observant. They understand more things than we think. So teach them in age appropriate ways what sex education is all about, what rape is all about, obviously in a very sensitive way. You as a parent, you owe that to your child, to teach them who to trust, when to trust, how to trust, what to do in a situation. Because children, no matter how much you tell them don't do this and don't do that, somehow they will still do what you tell them not to do. They don't know, because they are not that mature as you. Even as adults, we make mistakes. We may take a lift from somebody just because we're running late or it's getting dark, and we get into the wrong vehicle and we become a victim. Yes. So be aware. Sandeep wants to say something here. Add on. इसमें इन सब चीज देखो, जो इशारा ने बोला ना, मैं हमेशा उस चीज के लिए कहता हूँ कि जब तक मोरालिटी नहीं आएगी, आप एजुकेट नहीं करोगे, तब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी। बट इसमें एक चीज बहुत सोचने वाली है, साहब आपको भी आप भी ध्यान दोगे। प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन की, सोसाइटी की, माइंडसेट की नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ फीमेल। यस, आप टीवी देखते हो, एक अंडरवियर का एड आ रहा है, मेल अंडरवियर का, उसमें क्या दिखाया जाता है कि एक लड़का एक खास तरह के अंडरवियर पहन के घूमेगा, सारे शहर की लड़कियां उसके पीछे भागेंगी। डीओ लगाएगा, सारे शहर की लड़कियां उसके पीछे आएंगी। शेव करेगा, सारे शहर की लड़कियां उसके पीछे आएंगी। खास तरह की शूटिंग कपड़े पहनेगा, सूट लेंथ पहनेगा, सारी लड़कियां उसके पीछे आएंगी। दिस ऑब्जेक्टिफिकेशन इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो माइंडसेट बच्चों को हो रहा है ना, आप उनको दिखा क्या रहे हो? आप यही दिखा रहे हो ना कि लड़की सिर्फ इसी चीज के लिए होती। एंड व्हेन दे स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, व्हेन दे स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस थिंग, तब उनको पता लगता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा ऑफेंस हो गया। उससे पहले उनको खेल लगता है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो उसके लिए एलियन एलिमेंट नहीं है, उसके लिए रूटीन का पार्ट है। उसको लगता है कि एक चिंगम चबाऊंगा, पड़ोस वाली लड़की उसके साथ खड़ी होगी। दैट व्हाट वी आर फीडिंग नाउ, यही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स, मैंने जैसे आपका जो टॉपिक था आज हमारा, क्या स्ट्रिंजेंट लॉज रेप को प्रिवेंट कर सकते हैं? मैं कहता हूं आप दुनिया का सबसे ज्यादा हिंसक कानून लेकर आ जाए, तब भी नहीं रुकेगा, तब भी नहीं रुकेगा। बिकॉज एवरी रॉन्ग डूअर हैज अ रीजन टू सेटिस्फाई हिज ओन गिल्ट। इशारा इज अ क्रिमिनल। इशारा को पता है कि कोई भी क्रिमिनल ऐसा नहीं होगा कि उसके पास हर ऑफेंस के लिए अपनी गिल्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कोई रीजन ना हो। उसके पास होता है, चाहे वो कहीं से कितना भी गलत हो, बट होगा जरूर। कोई यही नहीं बोलता कि मैंने ऐसे ही कर दिया, नहीं, ऐसे ही ऑफेंस नहीं करा, उसके पास एक रीजन है, जस्टिफाइड रीजन है उसकी नजर में। तो प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ लॉ की, स्ट्रिंजेंट लॉज की इम्प्लीमेंटेशन की, एनफोर्समेंट एजेंसीज की नहीं है। प्रॉब्लम है तो सोशल वैल्यूज जो टूट रही है इनकी, दूसरा फीमेल का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है उसकी, और तीसरा वी आर नॉट टीचिंग आवर किड्स। हम उनको नहीं बताते हैं क्या। आज हर घर में आप देखोगे 4 साल का बच्चा आईपैड लेके अपने कमरे में अलग बैठा हुआ है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं बच्चा कहाँ पर।
जो एक्सपोजर मुझे 20 साल की उम्र में नहीं था वो आज 10 साल के लड़के को घर पे है। तो वो एक प्रॉब्लम है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, साधन बिना संस्कार के हमेशा विनाश करते हैं। अगर साधन दे दिए तो संस्कार भी दो, नहीं तो विनाश होगा। True. True. Yeah, and I'd just like to add that, in cases of rape, it should not become a political thing. It should not become a religious thing. This is a humanitarian crisis the entire world is facing. It is a degradation of society and its values. We need to recapture our value systems. We need to redefine who we are as a society and what is acceptable in our society. Do we want to live like this, where we are fearing going out, sending our children out? Do we want to live in a safe community? And if we do want all those things, then we have to take action as parents and as community members. So create that safe environment in your own communities, even in your family system. Don't just rely on the police to be everywhere, or in the courts to always be at your beck and call, or the government to be at your beck and call. Take the initiative to create the safe environment that we all need, especially around children. And Every Ishara, child should be, everybody else's child. As they say, it Ishara takes a village to raise a about child. safe environment. You would be surprised, Yes. Dr. Saab, to go with the NCRB data. 79% of rape cases is committed within the four walls of home. Of the करने home. वाले घर वाले थे, Yes. Incest भी है. थे। तो Yes. पुलिस कैन प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स? पुलिस तो बेचारी बाद में ही आएगी, लॉ तो बाद में Yeah. ही आएगा। प्रॉब्लम इज The danger lurks inside your house. एग्जैक्टली, and the reason behind it the same thing, objectification, lack of morality, lack of teachings। और इसमें एक चीज और भी है, जो अंडर रिपोर्टिंग की बात हमने शुरू में की थी, एक पॉइंट में भूल गया था। अंडर रिपोर्टिंग बाकी सब चीजों की वजह से तो होती है, बहुत बड़ा रीजन अंडर रिपोर्टिंग का क्या है ना, हमारा माइंड सेट है कि अगर लड़की के साथ रेप हुआ है तो लड़की ही गलत है। उसने कपड़े गलत Yes. पहने होंगे, उसने इंडिकेशंस ऐसे दिए होंगे, वो इजी टू हैंग अराउंड लगती होगी, वो इजीली एक्सेसिबल होगी। मैं कह रहा हूँ इन सब चीजों के बाद भी ये हक लड़कों को किसने दे दिया कि वो जाके रेप कर दे? बिल्कुल सही. Yes, बिल्कुल as सही. a society, we have become very judgmental. When women are raped within the family, we don't want to be stigmatized. We don't want to lay a report because the family name will be, trashed, and we don't want that kind of negative publicity. So we end up persuading the person not to lay a charge. And that is so wrong, because nobody deserves to be humiliated in that way. Rape is a very humiliating and heinous crime. Consider the victim, consider her needs, not what your needs are as a parent or anything. Consider her, she is a victim. I would like to add one more thing, Ishara. Though it is an offense considered against body, but I would say it is an the gruesome Sure. memory, the gruesome the memories can never, sordid memories It can never never be goes erased. away. Yes. Always, Yes, it will always be present. it scars a victim for life, and people Exactly. don't see that. Exactly. They suffer from post-traumatic stress disorder for life. Some of them So may I never would leave like their to ask. homes again. I would like Defense to lawyer, ask both. Yeah. Sharma, Sorry. something defense lawyer, if I'm so concerned about my client reputation, मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट को झूठा फंसाया गया, मुझे उसकी रेपुटेशन की बहुत फिक्र है। बट जब केसेस मुझे पता होते हैं कि केसेस सही हैं, बट इट इज माय प्रोफेशनल ड्यूटी कि मुझे मेरे क्लाइंट को डिफेंड करना है। लेकिन उस कंडीशन आप देखोगे ना डॉक्टर साहब, अगर आप कोर्ट्स में रेगुलर आज अभी तो आप एविडेंसेस देने आते ही हो, बट कभी जब क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह हो तो अगर आप वहां रुके हैं तो आप देखेंगे कि जेन्युइन विक्टिम में और ऑर्केस्ट्रेटेड विक्टिम में कितना फर्क होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बात करने के ढंग में, उनके रिस्पॉन्ड करने के ढंग में। यू कैन फाइंड आउट द डेमोनर, यू कैन फाइंड आउट इन अ सेकंड, एक सेकंड में आप ताड़ जाओगे कि ये सचमुच जेन्युइन विक्टिम है या ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल यहाँ पे इसने इसको यूज करा है। वो बहुत आराम से पता चलता है। Definitely. Dr. Bhupesh, I think it's important, like, for you to mention that if somebody has been raped, tell them what should they do, how should they preserve the evidence, what steps they should take to protect themselves and the investigation, so that they can, get justice. Because a lot of victims, I know, they feel vilified, they want to go shower, they want to clean up, and that's,
not It should what not they be done. should You be doing. have pointed out the right question here. Being a forensic expert, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि जब भी आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है, तो जो अपनी पर्सनल क्लीनिंग है, जो पर्सनल हाइजीन है, उसको आप 2-4 दिन ना करें और इस तरीके से जब तक आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी मेडिकल जो आपकी एग्ज़ामिनेशन है, वो नहीं हो जाता बिकॉज़ अदरवाइज़ द एविडेंस विल बी लॉस्ट because evidence can be there on over your body, over your clothing as well, whatever you were wearing. मुझे बोलना कभी-कभी अच्छा नहीं लगता है, तो पर आप इस चीज़ों का ध्यान रखें कि एविडेंस इज़ एवरीथिंग हियर, अवर कानून वर्क्स ऑन एविडेंसेस। या संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? संदीप जी। Well, okay, sir, as I told you that I have done my masters in crimes and investigation, so let me add few more things. इशारा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आप शायद बता नहीं पा रहे थे, मैं बता देता हूँ कि किस किस तरह के एविडेंसेस में होते हैं। देखो, जब तक आपका मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो जाए, मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी क्लीनिंग के लिए नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके अंडरगारमेंट्स जो आपने पहने हुए थे, आप उनको थ्रो अवे नहीं करेंगे, उनको वॉश नहीं करेंगे। जो कपड़े आपने पहने हुए थे, आप उनको थ्रो अवे नहीं करेंगे। और सबसे खास बात, जिस जगह पे ऑफेंस हुआ है, जिस जगह पे ऑफेंस हुआ है, आप उसको क्लीन नहीं होने देंगे और उसको आप सैबोटाज नहीं होने देंगे। किसी को आने जाने मत दो उसके ऊपर। यू नेवर नो, इवन 1 cubic hair कैन सॉल्व द एंटायर केस, इवन 1 drop of एंटायर केस। तो बिल्कुल मेक श्योर करो, होना चाहिए कि एविडेंस टेम्पर ना हो जाए, क्योंकि पुलिस वाले जब तक आते तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप खुद को बचा के रखो और जिस जगह पे ऑफेंस हुआ है उस जगह को कंट्रोल करके रखो, तब भी बहुत कुछ मिल सकता है। और तुरंत से तुरंत रिपोर्ट करिए प्लीज। हम सबकी, आपकी, हम तीनों से यही वो है, एक रिक्वेस्ट है कि आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा, किसी के साथ भी, इवन इट इज मेल और फीमेल, यू शुड रिपोर्ट इट टाइमली। अगर आपको लगता है कि एक पुलिस स्टेशन, आजकल इतने सारे जो सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया की बात ना करें, डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म बन गए हैं कि हम वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। जी संदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐड कर देता हूँ डॉक्टर साहब, जो आप कहना चाह रहे थे कि आपको लगता है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मान लो कि पंजाब में, बट मैं हूँ आज दिल्ली में, तो दिल्ली वाले तो क्या, मैं तो पंजाब जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। एक कंसेप्ट होता है जीरो एफआईआर का, जिसे हम जीरो एफआईआर कहते हैं। जीरो एफआईआर हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस एफआईआर का कोई नंबर नहीं होता है। आप दिल्ली के कोर्ट थाने में जाओ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, दिल्ली पुलिस स्टेशन इज बाउंड टू रजिस्टर योर एफआईआर, और उस एफआईआर को रजिस्टर करके 0 नंबर के साथ वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर करेगा फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो जहां पंजाब में आपके साथ हुआ था, वहां पे पुलिस उस एफआईआर पे अपना नंबर डाल देगी। इसलिए जीरो एफआईआर का कंसेप्ट इंडिया में सबसे पहले पुनाती रामूला वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसके बाद आसाराम बापू, जो उनके सो कॉल्ड गॉडमैन है, उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, ऑफेंस जोधपुर में हुआ था, एफआईआर दिल्ली के कमला मार्केट थाने में हुई, तो वो जीरो एफआईआर ही हुई थी उनके अगेंस्ट में। तो अगर आपको लगता है कि कोई पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस के ऊपर आपकी एफआईआर नहीं करती है, तो दैट इज रॉन्ग। इवन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में मैंडेटरी करा है कि पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर, और अगर वो एफआईआर नहीं करती है तो दैट विल बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 166 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी। Yes. True. So I think guys you must have learned a lot. बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, आपके सवाल बहुत सारे हैं और हमारे पास जवाब देने के लिए भी बहुत कुछ है, पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी समय की कमी है और आज हम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पाएंगे। पर हमने ये देखा कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और मैं तहे दिल से यहाँ पे संदीप जी का और इशारा जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, आप मेरे चैनल पे आए और इतनी जरूरी बात जो संदीप जी आपने बताई कि जो जीरो एफआईआर के बारे में आपने बताई, या आपने ये बताया किस तरीके से डस्टिंग या क्लीनिंग जो नहीं करनी चाहिए और किस तरीके के केसेस ऐसे होते हैं और क्या लॉज हैं, और अभी तक जो मैरिटल रेप है वो अभी लॉ में नहीं आया। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि अच्छा है लॉ में नहीं आया है, तो डेफिनेटली वो एक इशू बन सकता है। और इशारा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, for telling us all the aspect of the criminological and the family aspect, the influencing aspect of the rape for our audience. And definitely we will meet once again someday, sometime we will fix on certain issue, but definitely this is the major issue of the day which is happening, which we are seeing. जब तक किसी और के साथ होता है तब तक हम उसे एक तमाशे की तरह देखते हैं या एक न्यूज की तरह पढ़ते हैं, पर जब अपने किसी घर में होता है तब हम उसको रियलिटी में फेस करते हैं,
तब हम उसको एक सच्चाई की तरह देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो हमको हर एक रेप केस को, किसी भी महिला के साथ ऐसा होता है, किसी भी बहन के साथ ऐसा होता है, हमको उसको इसी तरीके से देखना चाहिए कि जैसे कि मेरी बहन के साथ हुआ है या मेरी बेटी के साथ हुआ है, तभी हम रियलिटी पे उतर पाएंगे और तभी हम जस्टिस दे पाएंगे। जिस तरीके से निर्भया की माँ अकेली कैंडल लेकर भरी सर्दी में निकल गई थी और उसने इंसाफ दिलाया, तो हम यही आशा करते हैं। जी संदीप जी, मैं आपसे लास्ट में एक शब्द सुनना चाहूंगा, कोई आप कुछ कहना चाहते हैं तो। मैं यही कहूंगा जो आपने बात बोली, कि एवरी इंग्लिश में फ्रेज हम यूज करते हैं दैट एवरीथिंग सीम्स वेरी इजी अंटिल इट इज हैपनिंग विद समवन एल्स। हर चीज बहुत यस, आसान है जब तक वो किसी और के साथ हो रही है। और दूसरी बात जो आपने क्राइम के लिए बोली, अ, हम डेली क्राइम के बारे में पढ़ते हैं, हम डेली क्राइम के बारे में सुनते हैं, देखते हैं। मैं तो वकील हूं तो लड़ता भी हूँ। पर एक बात हम कभी नहीं सोचते कि आज जो क्राइम हम दूसरे के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम भी उसका एक हिस्सा हो सकते हैं कभी। तो वी शुड बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। और लास्ट में वही चीज, लॉ कैन ओनली डिटेक्ट but cannot prevent. It's morality and education. Please teach your siblings, please teach your juniors, children, brothers and sisters that behave yourself, behave responsibly. Always maintain a very dignified distance and very dignified. You would say you should always behave. हिंदी में बोल देता हूँ कि बहुत संभल के व्यवहार करना है, बहुत अच्छे से करना है। आपके लिए वो लड़की हो सकती है, लेकिन किसी के लिए बहन है, किसी की वो बेटी भी। सेम मैनर जैसे आप, बहुत संभल के बिहेव करना है, बहुत संभल के हमें बात करनी है। इशारा और योर लास्ट वर्ड। जी एक चीज और वकील के सॉरी। तौर पे बताता हूँ, एक एफआईआर भी हो गई ना, जिंदगी में भूल जाना कि इंडिया में तो करियर बनना नहीं है, कुछ नहीं बनेगा, उससे बहुत संभल के रहना। जी इशारा। Okay, I'd just like to say that give your all to rape survivors and to rape victims. They need your support. Don't judge them. As a family, don't judge them. Support them. Get them the justice that they deserve. And teach the family system and out of the family system to respect women and children. They have a right to live their lives the way they like to. They can wear whatever they like to, but it does not mean that they are a piece of meat that you can take advantage over them. And when you see something going wrong, please report it. Do something about it. Don't just ignore it and say that, oh, it's not me. It can never happen to me, because it can happen to you. No matter what socio-economic status you may have in society, rape can happen to anybody at any time. So be proactive and be socially responsible. Don't expect the government to do everything for you. We want a safer society, so create it. We all are responsible to create the safer society, and Exactly. that was the main motive of our session also, that to create the awareness. संदीप जी, बड़ा बुरा लगता है जब एक 14 साल की बच्ची को या 15 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, 6 महीने की प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। एक 77 साल का 77 और ईयर ओल्ड मैन ये काम करता है, बड़ा बुरा लगता है। कुछ भी देखिए, असामाजिक तत्व या कुछ भी उसकी मेंटालिटी हो सकती है, पर अ क्राइम इज अ क्राइम। वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड for this thing on my platform, on this record, I would like to thanks both of you from the bottom of my heart, that you came here and open up for the legal and the criminological aspect. So at least people should know what is there, what can happen, and what they need to take care. प्लीज प्लीज प्लीज, अगर कोई क्राइम होता देखते हैं, रिपोर्ट इट, report it. If you cannot report it to the police station, report it via social media or report it via any place, but please report it. जी संदीप जी, यहाँ कुछ कहना चाहते हैं? एजुकेट योर, मैं आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ। पुलिस, इनकी एक शिकायत होती है कि पुलिस वाले कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। कुछ मत करो, नहीं कर रहे हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस होता है, आपकी कोर्ट्स के अंदर ही होते हैं वो ऑफिस। लीगल सर्विस अथॉरिटी, ओके। ये हाई कोर्ट के पैटर्नेज में ही होती है। डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का ऑफिसर उसको सुपरवाइज करता है। तो आप वहां चले जाओ, वहां पे उनके लीगल एड काउंसिल्स होते हैं, वो आपका काम करेंगे। पुलिस अगर नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, पुलिस कोर्ट में आके आंसरेबल है। आप कोर्ट पहुंच जाओ एक बार किसी के ऊपर। पुलिस अगर काम नहीं कर रही ना थाने में, मत करने दो, आप कोर्ट आ जाओ। आपको लग रहा है आप पैसे नहीं दे पाओगे, मत दो, आप लीगल एड काउंसिल की सर्विसेज लो, आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के ऑफिस जाओ, आप वहां जाके काम करो, लेकिन आप जाओ जरूर।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिली, बहुत सही बातें हुई इशारा जी और संदीप जी। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का, आप दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जितने भी लोग मुझसे यहाँ पर, हम तीनों से यहाँ पर जुड़े हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे बहुत लोगों ने। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए हम लोग, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। वरना ये बातें तो इतनी बड़ी हैं, ये चीज, ये इश्यू इतना बड़ा है कि ये कभी शायद हम इस पे 2 दिन भी बात करें, संदीप जी और इशारा जी, आप सही समझेंगे, ये खत्म नहीं हो सकता। इश्यूज इतने True. बड़े हैं, इसमें इसमें पेचीदगियां इतनी है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस इतने ज्यादा हैं कि हम लोगों को समझना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। पर हम ये जानते हैं, द थिंग स्टार्ट फ्रॉम आवर हाउस, द प्रिवेंशन, the prevention of a crime starts from our house, from our heart itself, that how we reciprocate or how we respond to a situation when it happens with somebody else। जब वो किसी और के साथ होती है तो हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं। और इन्हीं बातों के साथ जी जी जिस जिस यहाँ पर संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं फिर से। इकोनॉमिक्स में एक बात कही जाती है दैट एवरी इंडिविजुअल इज अ सोसाइटी। यस, जब हम अपने अपने तरीके को ठीक कर लेंगे ना, देश अपने आप ठीक हो जाएगा, सोसाइटी अपने आप ठीक हो जाएगी। बजाय दूसरे पे इल्जाम लगाने के पहले अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लें। एटलीस्ट अगर वी विल बी एबल टू डू अवर 50% फॉर द सोसाइटी, देन सोसाइटी विल टेक केयर ऑफ 50% हेल्थ। तो इन बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। आप लोग यहाँ पर आए, आप क्रिमिनल लॉयर और क्रिमिनोलॉजिस्ट यहाँ पर आए, और मेरे प्लेटफॉर्म की आपने ना ही शोभा बढ़ाई बल्कि लोगों को बहुत ज्यादा एजुकेट किया इस चीज में। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छे कमेंट्स यहाँ पर लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच both of you and all the viewers and all the true people who are watching this video and who will watch this video. Thank you very much. Thank you, Dr. Bhupesh. Thank you, Dr.